This the new topic is the uh, Maxwell's right hand thumb rule. Okay, so here you can see we are holding a straight current carrying conductor in which the thumb points to the direction of current. Yeah, see the diagram. We are holding a straight current carrying conductor in which the thumb, you can see the thumb is showing pointing out downwards. तो ये जो हमारा जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है करंट की डायरेक्शन को. एंड सी दिस इज द थंब. नाउ द रेस्ट द फोर फिंगर्स, जो फोर फिंगर्स है वो कर्ल है, राउंड शेप में है, मुट्ठी बंधा हुआ है. नाउ दिस द कर्ल फिंगर्स, ऑल द फोर फिंगर्स कर्ल फिंगर्स, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यू कैन सी द सेकेंड फिंगर में यहाँ पे गोल सर्कुलर बना हुआ है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन ऑल्सो यू कैन सी इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर. फिंगर जहाँ पे पॉइंट हो रहा है उस डायरेक्शन में means the magnetic field will get produced. This is the Maxwell's right hand thumb rule. Okay, so here also you can write, it states that if you hold the current carrying conductor straight wire in the grip of your right hand, in the right hand when you will hold in such a way that stretch your thumb points in the direction of current as we have seen in the diagram, and the direction of curl of the fingers, जो हमारे fingers जो curl है वो क्या करते हैं, हमने magnetic field को डिफाइन करते हैं, द डायरेक्शन. ओके, दिस रूल इज द मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स कॉर्सक्रू रूल भी बोला जाता है. इट इज अनदर नेम फॉर दैट. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप. नाउ व्हाट we will see about the magnetic field due to the current through a circular loop. See here you can see one circular loop is there, here one circular part is there. Here you can see at the corners there is concentric circles. Okay, at the top also you can see concentric circles, at the bottom also you can see concentric circles are there. Okay, as we move far, ठीक है, जैसे जैसे अपन दूर जाते जाएंगे ये क्या होता जाएगा, ये concentric circle धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा. As it reaches to the center, center में ये लाइन क्या हो जाएगी, straight. At the center the line will become straight. Okay, you can see the magnetic field lines due to circular coil. Now you have already seen the diagram. At every point in a circular current carrying circular loop, the magnetic field is formed of a concentric circle. Already have seen the diagram. Okay, so as you move away from it, the circles become larger and larger. जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे सर्कल बड़ा बड़ा होता जाएगा. As we reach to the center of the loop, उस लूप के हम लोग जैसे सेंटर में पहुंचेंगे तो that time you will find that it is, you can see a straight line. Okay, the field is of straight line. After that what we can discuss, see the magnetic field produced by a current carrying circular loop में क्या होता है, जो हमारा magnetic field होता है that is directly proportional to current. B already I told in the last video that B denotes the magnetic field. So the B is directly proportional to I. That is the first equation. Second, B is directly proportional to N. What is now capital N? Capital N is what? That is the number of turns. Means how many turns are there? Means total circular coils turns are there. How many turns are there? So what you will come to know from these two equations, that if we'll increase the current, means definitely the magnetic field will increase. If the number of turns will increase, जितना ज़्यादा number of turns होगा उतना ज़्यादा magnetic field होगा. और क्या हम लोगों ने जाना इस चीज़ से, और how much the current will get increased, that much magnetic field will also get increase. Okay, so the strength of the magnetic field produced by the current carrying circular coil, वो कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे. जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. फ्रॉम दैट ओनली वी केम टू द कंक्लूजन दैट इफ यू वांट टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, और वी हैव टू इंक्रीज द करंट विच इज फ्लोइंग इन द कॉइल. Magnetic field due to the current in a solenoid. Now what do you mean by the magnetic field due to the current in a solenoid? Now the question is, what do you mean by solenoid? Okay, a solenoid is defined as a coil consisting of large number of circular turns of insulated copper wire. solenoid क्या होता है, एक coil होता है जिसमें बहुत सारे turns होते हैं, मीन्स राउंड 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 बहुत सारे उसमें turns होंगे, that is made up of insulated copper wire. These turns are wrapped closely to form a cylinder. मतलब एकदम पास पास में रहेंगे, जस्ट एकदम पास पास में उसको हम लोग राउंड 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 द सर्कुलर कॉइल्स विच विल मेक विच विल बी नियर टू ईच अदर टू फॉर्म ए सिलेंडर. उसमें क्या एक सिलेंडर फॉर्म होगा. जस्ट यू सी द डायग्राम हियर, यू कैन सी एट द सेंटर द कॉइल्स आर देयर. कॉइल्स मिल के क्या सेंटर में क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया. ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड.
So here what happens, see the magnetic field, ऊपर में देखो the concentric circles you can see, at the bottom also you can see the concentric circles, at the center you can see the parallel lines. Now what we get from this solenoid, okay, this is that the field lines around a current carrying solenoid are similar to that produced by bar magnet. Just we have seen a bar magnet also in the last class, मैंने last video में discuss किया था नॉर्थ पोल साउथ पोल. We have seen the magnetic field around a bar magnet. तो बार मैग्नेट में जिस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी टाइप का मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में भी होता है. यू हैव ऑलरेडी सीन द कंसेंट्रिक सर्कल्स एट द टॉप, द कंसेंट्रिक सर्कल्स एट द बॉटम. सेम यही हम लोग ने बार मैग्नेट में भी देखा था. दिस इज द सिमिलर थिंग विच वी फाउंड नाउ. दिस मीन्स दैट द करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज इट हैज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. देखो बार मैग्नेट में भी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, वन इज नॉर्थ पोल, वन इज साउथ पोल. सो हियर आल्सो व्हाट वी कैन से after comparing the solenoid with a bar magnet that the magnetic fields are same, means there are chances that the solenoid also acts as one end as north pole, second end as south pole. मतलब एक end north pole की जैसा act कर रहा है, second south pole की जैसा act कर. Here also you can see again the diagram. Here you can see this is what the north pole and south pole, the N and S. Okay, the north pole and the south pole. The field lines inside the solenoid are parallel to each other. Okay, field lines already we have seen the diagram that the field lines at the center was parallel to each other. Thus the strength of magnetic field is same at all points inside solenoid. मतलब जो solenoid बीच में जो सिलेंडर फॉर्म बना हुआ है, it means parallel means जो हमारा जो magnetic field का strength है वो same है. तो जितना जगह वो parallel है उतने जगह वो क्या है, the strength is same. Hope you understood. Thank you.